Good morning, dear students. This is Neha, your course teacher, and our course title is Rainfed Agriculture and Watershed Management, and course number is AGRO-5321. So today we will discuss about the watershed management and their problems, objectives of watershed management, and the principles of watershed management. Okay, so let us start the topic, which is the problems of watershed management. So in our previous lecture we had already seen the some basic introductions about the watershed. So what is the meaning of word watershed? So we can say it is made up by two words like water plus shade. Okay, so wherever watershed in like land and soil water bodies, so that is happening here is the water that is coming into is being deposited and being collected in some areas, and finally it is having a common outlet. Okay, that particular arrangement is known as watershed, and that management is known as watershed management, and such a kind of reason is known as, we can say, the watershed. Okay, so this is a very brief discussion about the watershed management. In our previous classes we have already talked about the stream areas, stream orders, about where we discuss what are the fluvial orders. Okay, land form in fluvial orders, we can say. So when we talk about the stream orders, we can understand the formation of watershed. Okay, how the watersheds are formed, we can say. So suppose I have a two streams, say. Okay, so the first streams and two streams combining to the forms a second order streams, we can say. Okay, so now if I am asked to demarcate the watershed, I can say the first order and the second order combining and the found the third order of stream, we can say, and the whole formation is called the watershed management, and it would be divided from the another region according to the areas and size area, we can say. Okay, likewise some kind of micro watershed, macro watershed, watershed management, and the sub watershed management. Okay, so in macro watershed we can say we can consider the more than 50,000 lakh hectare area, that would be a macro watershed management, as compared to in mini watershed management, the less than 100 hectare area, that would be considered for the mini watershed management. Okay, so these are all about the brief information again for watershed and watershed management. So let us come to the point and the problems of watershed management. Okay, so basically for the formation of watershed management, for the maintenance of the watershed management, we have four problems like physical problems, resources use problems, end problems, and socio-economic and other problems. Okay, so first one is a physical problems. When we talk about the physical problems, we could say the geographical area, the soil, the land capability, we can say. Okay, the land selectivity, we can say. Okay, so steep slope, bad lands, weak geographical formations, saltation or reservoir, etc. can be found by the observation of existing map. So problems such as heavy and intense rainfall, excessive runoff, and strong winds can be identified for the weather and hydrological data. Okay, so we all know that the problems of geographical data means somewhere the slopy regions are formed. Okay, somewhere the gravely soil particles are formed. Okay, so in different area, different soils and geographical areas are found. Okay, अलग अलग टाइप के जियोग्राफिकल एरिया, अलग अलग टाइप की सॉइल जो है हर अलग अलग लोकेशन पे पाई जाती है. ठीक है, तो इस तरीके के जब अलग अलग लोकेशन पे हमें बहुत सारे प्रॉब्लम फिजिकली फेस करने पड़ते हैं, उनके अकॉर्डिंगली हमें क्या होता है, वाटरशेड डेवलप करने पड़ते हैं. राइट, एंड वाटरशेड का मैनेजमेंट करना होता है अकॉर्डिंग टू द एरिया, अकॉर्डिंग टू द सॉइल, अकॉर्डिंग टू द
the geographical slope, we can say. Okay, so before the physical, before we can understand the what is the problem of, what is a physical problem, we have to understand the mapping सिस्टम. ओके, मैप में हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है कि कौन सी सॉइल है उस पर्टिकुलर रीजन पे हमें फाउंड हो रही है, हमें मिल रही है, या किस तरीके का एरिया है. अकॉर्डिंग टू दी एरिया हम क्या करते हैं, वाटरशेड मैनेजमेंट को बैलेंस करते हैं, मेंटेन करते हैं, वी वुड से. ओके, एंड द सेकेंड प्रॉब्लम इज रिसोर्स यूज प्रॉब्लम. सो प्रॉब्लम सच एज शिफ्टिंग कल्टिवेशन, एक्सेसिव क्रॉपिंग, forest destruction, fire, overgrazing, human and animal pressure, poor and road construction and uncontrolled mining. ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम है वो रिसोर्सेज प्रॉब्लम होते हैं अकॉर्डिंग टू द एरिया, अकॉर्डिंग टू द लोकेलिटी. अगर हम वहाँ पे वाटरशेड का मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पे रिसोर्सेज प्रॉब्लम भी होते हैं. ठीक है, कि वहाँ पे किस तरीके की कल्टीवेशन हो रही है, कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न हम अपना रहे हैं उस एरिया पे. ठीक है, किस तरीके का फॉरेस्ट एरिया वहाँ पे फाउंड है, हमें मिल रहा है, कितने फॉरेस्ट एरिया है, मतलब कितना सिल्वीकल्चर टाइप की क्रॉपिंग वहाँ पे हुई है. तो ये सारे जो है वो रिसोर्सेज यूज प्रॉब्लम में आते हैं. राइट, देन द एंड प्रॉब्लम इज द फाइनल इफेक्ट्स ऑफ वाटरशेड डिग्रेडेशन, दैट इज सॉइल एरोजन, लैंडस्लाइड्स, हैवी सेडिमेंटेशन, वाटर पॉल्यूशन, फ्लड्स एंड ड्रॉट. ओके, सो ये सारे एंड प्रॉब्लम्स है जो कि नेचुरल प्रॉब्लम है, वी कैन से द नेचुरल प्रॉब्लम, क्योंकि लैंडस्लाइड्स, वाटर पॉल्यूशन ड्यू टू द एक्सेस रेनफॉल हम कह सकते हैं. ठीक है, इन सब चीज़ों से जो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर इरोजन हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, ये सारे जो है वो एंड प्रॉब्लम की कैटेगरी में आते हैं. ओके, एंड द लास्ट प्रॉब्लम इज सोशियो इकोनॉमिक एंड अदर प्रॉब्लम्स लाइक मिसलेनियस प्रॉब्लम, वी वुड से. सो दिस इंक्लूड लैंड टेन्योर, पॉवर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन, लो एक्सेप्टेंस ऑफ द इनोवेशन, सीजनल शॉर्टेज ऑफ द लेबर, and then etc miscellaneous problems. Okay, so low poverty, that means it is found the malnutrition, we can say that particular population, वहाँ पे जितना population है वो malnutrition found हो जाता है. ठीक है, तो उस तरीके से हम अगर देखें for the education purpose, lack of education, because people are not aware for the what is a watershed. We have no idea about the watershed management, we would say. Then the next is the low acceptance of the innovation, because the generally people are a very हम कह सकते हैं कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, एक्सेप्ट क्या नहीं कर पाते, न्यू इनोवेशन को, या वी हैव अ वेरी लेस रिस्क बेयरिंग एबिलिटी, वी कैन से. हम किसी भी नए इनोवेशंस को अडॉप्ट करने में रिस्क नहीं लेना चाहते. राइट, सो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. एंड एज यूजुअल द शॉर्टेज ऑफ लेबर इज the big problem of the management of watershed management. ठीक है, ये जो बहुत ही बड़ा समस्या है कि अगर हमें लेबर नहीं मिलते हैं. ठीक है, बेसिकली हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में हमेशा ऐसा प्रॉब्लम होता है कि लेबर का जो शॉर्टेज हो जाता है हमको. राइट, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो वाटरशेड प्रॉब्लम में हमें फेस करने होते हैं. ओके, सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट. So the objective of the watershed management, so there are a few objectives of watershed management. So to control damaging runoff and soil erosion, as we all know that. ठीक है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है सॉइल एरोजन, वाटर एरोजन नहीं होने देना हमें, और जो भी रन ऑफ वाटर लॉसेस हो रहे हैं. ठीक है, रन ऑफ की वजह से जो एक तो वाटर लॉस हो रहा है, वाटर वेस्ट हो रहा है, एंड द सेकेंड थिंग इज वी वुड से the excessive runoff of the water causes the soil and land erosion, we can say the water erosion some likewise. Okay, so to protect, conserve and improve the natural resources for efficient and sustained production, to manage the watershed in order to minimize flood, drought, landslide, etc. Okay, so it is also the managing the some natural disaster, we would say. ठीक है, वाटरशेड मैनेजमेंट अगर प्रॉपरली है तो वो हम कहीं हद तक, अगर हमने प्रॉपर चैनल जो है फॉर्म किया है अपने एरिया पे, तो हम जो भी नेचुरल डिजास्टर होते हैं उनको कुछ हद तक हम क्या करते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. राइट, सो टू प्रोटेक्ट एंड एनहेंस वाटर रिसोर्सेज, रिड्यूसिंग सिल्टिंग ऑफ कंजर्वेशन स्ट्रक्चर एंड कंजर्विंग रेन वाटर, टू इंक्रीज द ग्राउंड वाटर रिचार्ज थ्रू इन सीटू कंजर्वेशन एंड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर. इन सीटू कंजर्वेशन लाइक
somewhere we we have to need the cultivation process like vegetatively growth करना, ठीक है, हमें बहुत से वेजिटेटिवली अपने प्लांट को हमेशा कवर रखना फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रन ऑफ वाटर वी कुड से, ठीक है। तो ये सारे जो प्रिकॉशन मेजर्स है, वाटर हार्वेस्टिंग प्रिकॉशन मेजर्स है, ये सारे हमें क्या करने होते हैं, अपनाने होते हैं, ओके। So the rehabilitated to deteriorating lands to utilize the natural local resources for improving agriculture and allied occupations so as to improve the socio-economic condition of the beneficiaries, ठीक है। ये हम वाटर शेड मैनेजमेंट करते हैं, उससे क्या होता है, वाटर की अवेलेबिलिटी के साथ साथ हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में अलग अलग अलाइड ऑक्यूपेशन मतलब डिफरेंट एंटरप्राइजेस में, ठीक है, एट द सेम टाइम इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, डेयरी इंडस्ट्रीज़ में, हर जगह में वाटर की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वो हम मैनेज कर सकते हैं, ओके। तो ये क्या होता है, सोशो इकोनॉमिकली जो है वो हमेशा बैलेंस्ड होना या मेंटेन रखना, हम कह सकते हैं। इट इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी वी कैन से, और ऑब्जेक्टिव हम कह सकते हैं, ठीक है, उद्देश्य है हमारा। और उद्देश्य के अलावा हम कह सकते हैं नीड है हमारी, हमें इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए वाटरशेड मैनेजमेंट करने की अधिक से अधिक आवश्यकता है, ओके। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, principle of watershed management. So let us see what are the principles for the watershed management. So firstly, the utilizing the land according to its land capability classification. So हमें क्या होता है, land का utilization करना होता है टू द चेकिंग लैंड कैपेबिलिटी, किस तरीके की लैंड है, अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू द सॉइल ऑल्सो। देन पुटिंग एडिक्वेट वेजिटेटिव कवर ऑन द सॉइल सरफेस फॉर कंट्रोलिंग द सॉइल एरोजन मेनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ठीक है, हमेशा अपने सॉइल को वेजिटेटिवली कवर्ड रखना, ओके, for the reducing soil erosion we can say, okay। So our main purpose and principle for the watershed management as well as water harvesting is a very important for the to cover the soil through the vegetative growth we can say, okay। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में हमेशा अपने सॉइल को वेजिटेटिवली कवर्ड रखने से सॉइल लॉस मॉइस्चर लॉस नहीं होता, और जो सॉइल जो एरोजन होता है वो नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि सॉइल कंजर्वेशन एंड वाटर कंजर्वेशन के लिए हमें हमेशा अपनी सॉइल को वेजिटेटिवली कवर्ड रखना चाहिए, राइट। Then conserving maximum rainwater at the place where it fall on the arable land by the conservation practices, draining out excess water with safe velocity of avoid soil erosion and storing it in different rainwater harvesting structures for efficient future use, ठीक है। हमें वाटर, हम कह सकते हैं कि हम जो ड्रेन करें, सपोज हमने वाटर शेड मैनेजमेंट का क्या उद्देश्य है, या वाटर शेड मैनेजमेंट कैसे कहते हैं, अलग अलग कैनल से, अलग अलग चैनल से या अलग अलग स्ट्रीम से जब वाटर आते हैं और उनके एक कॉमन पॉइंट होता है फॉर द ड्रेनिंग पर्पस, दैट होल अरेंजमेंट इज नोन एज वाटर शेड मैनेजमेंट, ठीक है, जैसे हमने पहले फर्स्ट लेक्चर में देखा था। तो ये जो है हम कह सकते हैं ये स्टोरिंग वाटर होती है, उसकी वेलोसिटी को मेंटेन करना, ठीक है, फॉर अवॉइडिंग सॉइल एरोजन, ठीक है, ये जो है हमारा पर्पस है, या हम कह सकते हैं इस सिद्धांत पे जो हमारा वाटरशेड मैनेजमेंट जो है वो वर्क करता है, राइट। Moving on the next, which is preventing gully formation and putting check dams and gully plugs at suitable intervals to control soil erosion and increase groundwater recharge. Safe utilization of marginal lands through alternate land use system, maximizing productivity per unit area, per unit time and per unit water, okay। मतलब वाटर की अवेलेबिलिटी बनी होगी तो ऑब्वियस है कि हमारा प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ेगा, पर यूनिट एरिया में जो हमारी प्रोडक्टिविटी हो रही है वो इंक्रीज होगी, ओके। देन द इम्प्रूविंग सस्टेनेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम एंड सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द इनहैबिटेंट्स, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी इकोसिस्टम मेंटेन होगा, क्यों मेंटेन होगा, क्योंकि रन ऑफ नहीं हो रहा है, ठीक है, प्रॉपर जो वाटर इकोसिस्टम हम कह सकते हैं, ठीक है, या हमारा जो ये पूरा पर्यावरण का जो बायोडाइवर्सिटी हम कह सकते हैं इकोसिस्टम है वो हमेशा सस्टेनेबल होता है, मेंटेन होता है, राइट। सो दीज आर द principles of watershed management, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल्स आर क्वाइट सिमिलर टू इच अदर, ओके। सो हमारा पर्पस ही हमारा सिद्धांत है, उसी सिद्धांत पे हम काम करते हैं, और हमारा बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मेन प्रिंसिपल्स इज द टू कंजर्विंग द सॉइल वी कैन से, टू कंजर्विंग द सॉइल एंड वाटर इरोजन हम कह सकते हैं, हमको सॉइल एंड वाटर इरोजन को रोकना है, टू रिड्यूस, टू प्रिवेंट द सॉइल एंड वाटर इरोजन,
right? So moving on the next slide, which is the steps for watershed management action plans. ठीक है, हमें watershed management, to form the watershed management, to form the watershed area, we have to we have to manage some steps for the action, for the action plans, we would say. So there are some plans for watershed management, which is identification and selection of watershed. Okay, we have to need the identification. What is the identification? The land identification, the soil identification, according to the poverty level, according to the area, according to the weather. ठीक है, ये सारी आइडेंटिफाई हमें करना पड़ता है फॉर द मैनेजिंग वाटरशेड मैनेजमेंट, राइट? एंड द नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ वाटरशेड. ओके, डिस्क्रिप्शन दैट मीन्स हमने कितने ह्यूज एरिया में मैनेजमेंट करना है. ओके, हमें किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वहाँ पे वाटर का, या वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो किस तरीके वहाँ पे अवेलेबल हैं, जिसके अकॉर्डिंगली हमें मैक्रो, माइक्रो, मिनी, सब मैक्रो वाटरशेड मैनेजमेंट करना है अकॉर्डिंग टू द एरिया. ओके, देन द नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अवेलेबल सॉल्यूशन. जो भी प्रॉब्लम्स, जैसे मैंने बताया, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि सॉइल कैसी, दैट वुड बी अ फिजिकल प्रॉब्लम. सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम में लोग अवेयरनेस है कि नहीं, हमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है. एंड प्रॉब्लम में क्लाइमेटिक जो भी नेचुरल डिजास्टर है उनको स्टडी करना पड़ता है. लाइक, तो दीज आर द एनालिसिस वी कैन से to plan for the watershed management. Okay, then designing the technology components, and then preparation of base maps for watershed, cost benefit analysis to indicate estimated costs, fixing the time frame, monitoring the evaluation to assess the progress of the project, on farm reach to identify solutions for site specific problems, good organizational structures. So that would be a excellent plan for the managing watershed. Okay, so these are a very important chapter for the from the watershed introduction to the steps of watershed management. So in till this lecture, we would say we had seen some introduction, some problems, then principles, objectives, and why we need to watershed management. What is the watershed, the kinds of watershed, the classification, the size ranges of watershed. Okay, so in our next lecture we will discuss about the factor affecting watershed management. That is a very important topic. Okay, so this is enough for today. Okay, so thank you very much, and till then, be safe, take care. Thank you.